जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज करते हैं। सबसे पहले हस्ब रिवायत में आपको थोड़ा सा पीएच डेक का इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम बताएंगे आपके आज के वेबिनार के हवाले से और सिट्रस पे अब तक हमने क्या काम किया है। उसके बाद हमारे साथ सीईओ पीएच डेक्स मौजूद हैं, तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद डॉक्टर रहील साहब अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे। उसके बाद डॉक्टर टिम हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं पीएच डेक के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप के मातहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। अगर हम पीएच डेक के विजन और मिशन, इसका क्रक्स बयान करें, तो इसका क्रक्स ये है कि हॉर्टिकल्चर के शोबे में हमने इसकी एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, इसकी वैल्यू एडिशन में इजाफा करना है, और हमने कौमी जीडीपी में इजाफा करना है। अगर देखा जाए पिछले 2 से 3 सालों में हमने इसमें खातिर ख्वाह इजाफा किया भी है। हमने अपनी जो रवायती प्रोडक्ट्स हैं उनके उनसे हट के गैर रवायती प्रोडक्ट्स पे भी काम करना हमने स्टार्ट किया है। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर भी दिए हैं। अगर हम पीएच डेक के मकसद की बात करें, मैंडेट की बात करें, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर में होता है वो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के आप हॉर्टिकल्चर के देखें वो 30 से 40% तक हमारे होते हैं। अगर हम उस पर काबू पा लें तो काफी हद तक हम अपनी जो हमारी प्रोडक्शन है या हमारी एक्सपोर्ट है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसी हवाले से हम अब काम कर रहे हैं वैल्यू एडिशन पे। आपको पता है कि जब तक हम वैल्यू एडिशन पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो सकती। दुनिया वैल्यू एडिशन में कहाँ से कहाँ चली गई है, हम भी इंशाल्लाह इस पे आ रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी पैकिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स पैकिंग पे आ रहा है, सर्टिफिकेशन पे प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। इसके अलावा मैंगो बैगिंग हमने की है, बनाना बैगिंग की है। इस तरह सिट्रस पे भी हम अपना काम ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। सिट्रस पे भी हम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन चीजों को हम थोड़ा सा हम इसको तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम सिट्रस पे अब तक हमने क्या काम किया है। सबसे पहले हमने सिट्रस का एक बुकलेट बनाया जिसे हम किताबचा कहते हैं। उसमें सिट्रस की सीडलिंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऑलरेडी हमने उस किताबचे में शाया किए हैं। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर हमने ये काम किया है। और ये बुकलेट हमारे पास अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को मैनुअल भी चाहिए तो वो भी हम उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सिट्रस पे मुख्तलिफ हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट रिपोर्ट भी हमने बनाई है। उसमें हमने इंटरनेशनल बताया है कि दुनिया में क्या सिट्रस पे काम हो रहा है और पाकिस्तान उसमें कितना फ्लॉज है। उसमें हमने वे फॉरवर्ड भी बताए हैं, जितने हमारे लूप होल्स हैं वो भी हमने बताया। ये भी हमारी वेबसाइट पे सिट्रस की रिपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें, हम सिट्रस पे वक्तन फवक्तन इसके फिनोलॉजिकल साइकिल के हवाले से इसके वेबिनार्स भी करते रहते हैं। अगर किसी ग्रोवर्स की, किसी एक्सपोर्टर्स की कोई क्यूरी आए तो हम रीच आउट करते हैं। उसमें हम फिजिकल जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो भी करते हैं, और वर्कशॉप्स इसके अलावा वेबिनार्स भी करते हैं, B2B मीटिंग्स भी करते हैं। तो ये तो था सिट्रस के हवाले से। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है वो इंडोनेशिया में जकार्ता में जो सिट्रस की हमारी डिमांड्स है, वो कैसे रिक्वायरमेंट्स है, उसकी क्या फुल फील्ड है, वो हमने आज के बारे में डिस्कस करना है। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रहील अनवार साहब हैं और डॉक्टर टिमसन ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन। तो अभी हमारे साथ डीजी साहब मौजूद हैं, अतर हुसैन खोकर साहब। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा आज के वेबिनार के बारे में बताएं और पीएच डेक के बारे में बताएं। जी अगर खोकर साहब मौजूद हैं सर। जुल्करनैन, डीजी साहब आई थिंक किसी और मीटिंग में बिजी हैं, तो मेरा ख्याल आप डॉक्टर साहब से या खावर साहब से इंट्रोडक्शन जी करवा दें। जी डॉक्टर अजीम साहब हमारे साथ अवेलेबल है। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करें सर। मेरी आवाज आ रही? थैंक यू वेरी जी मच। सर। थैंक यू वेरी मच। सेक्टर्स के हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, बहुत बड़ी तादाद में आज हमारे साथ वो शामिल हुए हैं। वी आर वेरी रियली वेरी थैंकफुल। वी आर थैंकफुल टू राहिल साहब and Tim Son from Australia, and we have very good memories with Australia. We were in a joint project from 2006 to I think 2012. Very long duration of citrus project. We learned a lot. We exchanged a lot of information with the Australian and on citrus, and we also exchanged a germ plug. Currently, almost more than 16 varieties we have from Australia, and they are with different institutions, including Sargoda Citrus Research Institute, as well as Tarnav at Tarnav Farm, and similarly with the NARC. So there was a very strong collaboration with Australia, and they really helped us to have very high productive and very high value
varieties from Australia with us. And currently, many of those varieties we know they have really huge potential. They are very unique in their taste and aroma, and there many of oranges are the seedless as well. So we have very good history, and I think today's seminar will be very, very important because from last many years, our exports are really reducing, and our almost major reliances on sectors on Kinnow and citrus and in diversification of our you see citrus varieties and particularly oranges, the Australian contribution is very high. We have quite diversified germplasm with us, but unfortunately we could not benefit from that germplasm to the extent that should have been. We should have benefited from all that varieties available with us. I think it will be very interesting to hear from our both speakers about opportunities that we have in Jakarta because Pakistan, we are currently desperate to redefine new markets. And Jakarta, Indonesia could be a potential market for us. So I hope that today's session will be a very special session. We frequently do, as Zulkarnain was sharing, he even shared the type of topics that we cover, almost all topics related to citrus, citrus production, citrus promotion. We covered that. But I think today's seminar is a very unique seminar. We will be better understanding how we can better perform, how we can better explore new markets, particularly in Jakarta. And Indonesia is a very big market. So anyway, welcome all participants and welcome both speakers. And we are eager to really hear from them. Thank you very much. Thank you, Zulkarnain. थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, अभी डॉक्टर रहील साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें और सर इसको कंटिन्यू करें सर। ओके, आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जुल्करनैन साहब। जी सर। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I'll start my presentation in Urdu for the convenience of the audience, and if Dr. Tim, when Dr. Tim will take up, he will start in his presentation in Urdu, in English, and I'll be there, and Zulkarnain will be there to translate any query from the audience or from Dr. Tim. Sorry. So but today, sorry, मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमारे दो कंपोनेंट होंगे। एक क्वालिटी का कंपोनेंट है, एक मार्केटिंग का कंपोनेंट है। सो आई बी टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंपोनेंट इन मोस्ट केसेस। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम राहिल अनवार है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये ACIR फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसकी कुछ नॉलेज शेयरिंग मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ था। इसको हम इन शॉर्ट सिट्रस वैल्यू चेन प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो खास मकसद था वो था कि हमारे जो किन्नू के या सिट्रस के ग्रोअर हैं वो स्पेसिफिकली स्मॉल होल्डर हैं और उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है, अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए और उनको मॉडर्न वैल्यू चेन्स में इंक्लूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ACIR की फंडिंग से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2022 में। अब तक तकरीबन इससे 3.5 या 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हमने प्रोडक्शन लेवल पर, सप्लाई चेन के मुख्तलिफ लेवल पर, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में मुख्तलिफ मॉनिटरिंग्स और सर्वेस भी किए थे और कुछ इंटरवेंशंस भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोर्ट मार्केट को टच करना है, लेकिन इसमें हमारी बहुत सारी लर्निंग हुई थी और हम PhD के तवज्जुह से इन लर्निंग्स को आपके साथ बार बार शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसको सेगमेंट में शेयर किया जा सकता है क्योंकि अगर हम सिट्रस इंडस्ट्री की बात करें ना तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक प्राइड है। बेसिकली टॉप लेवल हमारी सिट्रस प्रोडक्शन होती है और सिट्रस में अगर हम स्पेसिफिकली किन्नू की बात करें तो दैट ऑक्युपाइज द मेजर शेयर इन सिट्रस, पाकिस्तान सिट्रस इंडस्ट्री। हमारा हमारा जो
किन्नू है ये ज्यादा तौर पर सरगोदा बेल्ट में मौजूद है, सरगोदा, भलवाल, कोट मोमिन। और इसके अलावा हमारी अब टोवरटेक्सिंग भी एक नई हब क्रिएट हो रही है। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ इसकी वाबस्तगी है किसी ना किसी तरीके से। तो हजारों नहीं लाखों लोग इससे वाबस्ते हैं। और अगर पाकिस्तान की सिट्रस इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की सिट्रस इंडस्ट्री में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो सबके लिए बराबर है। तो इसलिए पाकिस्तान और खासकर पंजाब का हमेशा जो फोकस रहा है वो पाकिस्तान की और खासकर पंजाब की सिट्रस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने में रहा है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से हम सब ये देख रहे हैं और हम सबको इस चीज का अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान की सिट्रस इंडस्ट्री में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आ रही है। और इस चीज को बहुत हाई लेवल पर भी बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है कि क्यों पाकिस्तान की जो सिट्रस एक्सपोर्ट्स हैं मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हो रही हैं। कुछ साल पहले से तो ये हम एक टारगेट सेट कर रहे थे कि दो तकरीबन $200 मिलियन से ऊपर हमारी एक्सपोर्ट जा रही थी, एक्सपेक्टेड थी। और वक्त के साथ साथ ये कम होती गई हैं। उसके अपने कुछ इश्यूज हैं जिसको हम मतलब कंप्रिहेंसिवली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये आज की डिस्कशन में अगर हम ये देखना चाहें कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उसमें कमी क्यों आ रही है, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को अगर हम कंज्यूमर या कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी क्वालिटी में डिटेरियोरेशन कहाँ पर आ रही है, हमारी अपनी लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उसके बारे में मेरा ख्याल है हम सब काफी हद तक जानते हैं। और इस चीज का हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अदा करते रहते हैं। लेकिन हमारी ये जो आज की लर्निंग हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये है कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है और कहाँ पर हम कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, हम अपने इंपोर्टर की डिमांड पूरी नहीं कर रहे। और जो हमारा कंज्यूमर है जिसने अल्टीमेटली हमारा कंज्यूम करना है, उनको क्या मतलब हमारी जो किन्नू की क्वालिटी है और उसकी मार्केटिंग है उसमें कहाँ पर इश्यूज नजर आते हैं। तो इसके लिए हम ACIR का जो हमारा ये सिट्रस वैल्यू चेन प्रोजेक्ट था, इसके तवज्जुह से हमने इंडोनेशिया को विजिट किया। और वहां से जो हम लर्निंग हमने की वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मकसद इस विजिट का यही था कि हम किस तरह से अपनी उन कंस्ट्रेंट्स को, उन लिमिटेशंस को जो हमें किन्नू को compete करने में फील हो रही हैं, उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और अपनी किन्नू की मार्केटिंग को और इसकी क्वालिटी को हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान और इंडोनेशिया का ट्रेड रिलेशनशिप देखें तो उसमें जो किन्नू है वो बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के लिए इंडोनेशिया कोई नई मार्केट नहीं, ये एक बहुत वेल एस्टेब्लिश मार्केट है। और पाकिस्तान का किन्नू इंडोनेशिया जाता रहता है। और पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया हमारी जो फोर्थ बिगेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान के लिए। और इसमें पहला अफगानिस्तान, UAE, कजाकिस्तान, फिलीपीन, इसमें से मोस्टली जो हमारा शेयर है जो अफगानिस्तान या अफगानिस्तान का जो ट्रेड चैनल है और आगे जो रशिया तक जाता है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। इसमें हम ज्यादा तौर पर अपना B ग्रेड भेजते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप पहली दो और तीन डेस्टिनेशंस को देखें ना, तो उसमें हमारा ज्यादा B ग्रेड आता है। A ग्रेड में हमारा कुछ हद तक UAE भी जाता है, लेकिन A ग्रेड में फिलीपीन, इंडोनेशिया हमारी टॉप मार्केट्स में आते हैं। और इसमें हमारा जो वहां से हमें अर्निंग होती है, जो हमें वहां से रेवेन्यू मिलता है, वो भी काफी हद तक एवरेज वैल्यू का होता है। इस वक्त मैं आपके सामने जो MNSFR है उसके ट्रेड स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इंडोनेशिया से तकरीबन हम 1,19,000 पर टन के हिसाब से रेवेन्यू लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ में बाकी कंट्रीज के हिसाब से एक एवरेज है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया हमारे लिए काफी हद तक एक स्टेबल मार्केट है। और यहाँ से हम क्योंकि अपनी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से हम एक एवरेज प्राइस भी रिसीव करें। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया के हिसाब से देखें, तो ये आपके सामने फिगर्स हैं जो इंडोनेशिया का ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है, ब्यूरो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया की साइड से। उसकी मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स कुछ पेश कर रहा हूँ कि जो वो मैंड्रीन इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, उसमें चाइना का शेयर 78% है, ऑस्ट्रेलिया का 11 है, एंड बाय फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री फॉर इंडोनेशिया, जहां से मैंड्रीन आता है। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया के लिए भी पाकिस्तान की बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान जो यहाँ से यहाँ से मैंड्रीन सेंड करता है वो इंडोनेशिया की ट्रेड मार्केट में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन नीचे एक ग्राफ दिखाया गया है
आप उसको जरा काइंडली देखें कि पाकिस्तान जो वहां से एवरेज वैल्यू रिसीव करता है, पाकिस्तान के लिए तो वो एवरेज है, बहुत अच्छी है कह सकते हैं, लेकिन बाकी पहले दो कंट्रीज की निस्बत जो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया है, इसकी निस्बत हमारी जो सीआईएफ वैल्यू है जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रीट चार्जेस सारे शामिल होते हैं, दैट इज लेस देन चाइना एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। दो दैट मीन्स कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक पोटेंशियल है अपनी एवरेज प्राइस को मजीद आगे लेके जाने की, मजीद आगे इंक्रीज करने की। टू अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम अपना जो इंडोनेशिया के साथ ट्रेड में जो प्रॉफिट है या जो रेवेन्यू है उसे बेहतर नहीं कर सक रहे हैं, और इस जो गैप है 200 से लेकर $700 का, इसको हम किस तरह से मीट कर सकते हैं ताकि हम भी उतने पैसे कमा सकें जितना जिस तरह से चाइना एटलीस्ट कमा रहा है। और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया इज द नेक्स्ट बिग टारगेट फॉर अस। ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इस वक्त जो जो मेजर कंपटीशन है वो चाइना के साथ जरूर है, क्योंकि हमारा जो किनो मैंड्रिन है और चाइना के जो मैंड्रिन है वो सेम टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो तकरीबन मई से सितंबर तक अपनी एक्सपोर्ट्स करता है। तो आज की लर्निंग में मैं और डॉक्टर टीम पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मेरा काम होगा कि जो वहां पर क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, जो क्वालिटी इश्यूज हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना, और डॉक्टर टीम आपके साथ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। इन वेरी ब्रीफ, इंडोनेशिया की मार्केट से पाकिस्तान हमेशा अच्छे पैसे कमाता रहा है। कोटा, वहां का जो कोटा है उसमें हम पाकिस्तान से बहुत अच्छा माल भेजते रहे हैं, लेकिन जिस वजह से, और उससे हम एवरेज प्राइस भी ले रहे हैं, लेकिन जिस वजह से हमारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हम यहाँ पर आज सिर्फ डिस्कस करना चाहेंगे। जो हमने लर्न किया वहां से, इंडोनेशिया से, खासकर जकार्ता में हमने बहुत सारी मार्केट को टच किया, जिसमें इंपोर्टर भी थे, रिटेल मार्केट्स भी थी, सुपर मार्केट भी थी, और वेट मार्केट को भी हमने स्टडी किया। उसमें जो हमें सबसे बड़ा इशू नजर आया, जो यहाँ से किन्नू हमारा वहां जाता है, उसमें हम अगर देखें कि कौन से मेजर इश्यूज हैं, तो उसमें हमने जो एटलीस्ट मॉनिटर किए उसमें डिके, डिफॉर्मेशन, सॉफ्टनेस और चिलिंग इंजरी, और इसमें डिफॉर्मेशन एक बिगेस्ट इशू हमने देखा है जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बॉक्सेस में किन्नू हम भरते हैं, और जो वहां पर जाके जिसने सबसे पहले उसकी मॉनिटरिंग करनी है वो है इंपोर्टर। उसने क्वालिटी चेक करना होता है, और उसको जो सबसे बड़ा कंसर्न फील होता है वो है इसकी डिफॉर्मेशन, या उसकी शेप खराब हो जाती है, किन्नू पिचक जाता है और कहीं कहीं से कंप्रेस होता है। और इसका आप देख सकते हैं कि इंपोर्टर लेवल पर 38% ऐसे फ्रूट हैं जो ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुके होते हैं, विच इज अ बिग बिग कंसर्न। आपको कुछ इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें फ्रूट चपटे नजर आ रहे हैं, फिसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इंपोर्टर की तरफ से भी कंसर्न होता है, और हमने खुद इसको क्वांटिफाई किया जब वहां पर जाके इंपोर्ट डेस्टिनेशन पर जो यहाँ से हमारे रिफर कंटेनर गए थे, उसमें हमने ये एक मेजर इशू देखा है। हमने ये देखने के लिए कि ये इशू कहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कहाँ कहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल है, हमने जो वहां पर मुख्तलिफ बॉक्सेस को मॉनिटर किया, उसमें लेयर बाय लेयर हमने इसे मॉनिटर किया। तो हमने ये देखा कि टॉप लेयर में सबसे कम इशू ये डिफॉर्मेशन का आता है, मिडल में, मिडल लेयर में उससे ज्यादा आता है, क्योंकि आपको पता है हमारे 10 किलोग्राम के कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं और उसमें 3 लेयर्स बनाई जाती हैं। तो उसमें जो बॉटम लेयर है, यू कैन सी कि उसमें डिफॉर्म फ्रूट्स की रेशो सबसे ज्यादा होती है, जो बॉटम लेयर है उसमें। और आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि बॉटम लेयर में फ्रूट्स किस तरह से पैक किए गए हैं, जबकि टॉप लेयर में किस तरह से पैक किए जाते हैं। बॉटम लेयर में एक इशू जो हमने फौरी ऑब्जर्व कर सके वो तो ये भी था कि अगर फॉर फॉर एग्जांपल ये 66 की पैकिंग थी, 66 की पैकिंग थी, तो टॉप और मिडल लेयर में 22-22 की पैकिंग ठीक है, लेकिन जो बॉटम लेयर है उसमें 24 की पैकिंग की जाती है। फ्रूट फ्रूट की कोई रीजन हो सकती है, वो छोटा फ्रूट हो सकता है, साइज में स्मॉल हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन जो वो ओवर पैकिंग है वो भी एक डिफॉर्मेशन कॉज करती है। सो दैट वाज एट लीस्ट वन ऑब्जर्वेशन दैट वी सॉ इमीडिएटली। और इस चीज को हमने एटलीस्ट ये देखने के लिए कि क्या ये प्रॉब्लम हमें डेस्टिनेशन पे जो नजर आई है, क्या ये ओरिजिन पर भी नजर आती है ये प्रॉब्लम, हमने इसको सरगोदा में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की। हमने मुख्तलिफ सोर्स से कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे थे वहां से हमने लिए, और इसको हमने मुख्तलिफ एक हैंडसम नंबर में बॉक्सेस में ये देखने की कोशिश की कि क्या ये प्रॉब्लम ओरिजिन पर भी है या ये शिपमेंट का प्रॉब्लम है। एंड यू विल सी दैट इन दिस ग्राफ कि हमने दो सोर्सेज का कम से कम यहाँ डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन थी ये हमें अगेन द सेम बॉटम लेयर्स में 80% तक, 60 to 80% तक बॉटम लेयर में नजर आ रही है। टॉप लेयर्स में भी थी लेकिन बॉटम लेयर्स में
सबसे ज्यादा नजर आ रही है। सो दैट इज नॉट समथिंग के ये इशू ट्रांसपोर्ट के दौरान टेम्परेचर के इश्यूज या किसी और वजह से पेड़ होता है। नो, दैट इशू इज generated or that issue is produced right at the origin सरगोदा में, जो कि एक ज़ाहिर है एक सीरियस कंसर्न है। और इसका मतलब है कि हमारे लिए जो इसकी पैकिंग है वो या ग्रेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ एक एविडेंस के साथ जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हमने मुख्तलिफ फ्रूट बॉक्सेस को मुख्तलिफ सोर्सेज से जो लिया उसमें हमने ये देखा कि क्या जो नंबर है जो बॉक्स पर लिखा हुआ है क्या वो नंबर हमें मिल रहा है। एंड यू कैन सी द फ्रूट नंबर द फर्स्ट, आई थिंक यू कैन सी माई कर्सर मूविंग, आपको ये कर्सर नजर आ रहा है। हमने अगर तीन तीन बॉक्सेस मुख्तलिफ जगह से लिए ना तो आप देख सकते हैं कि आखिर में टोटल बॉक्सेस को आप देखें तो अगर ये 66 काउंट बुक का बॉक्स था तो इसमें या तो हमें 70 मिल रहे हैं या 62 मिल रहे हैं या 68 मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो काउंट है वो वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि देर इज सम प्रॉब्लम कि अगर हम उसे पैक कर रहे हैं फ्रूट को तो वो उसमें पैकिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। टू चेक दिस यूनिफॉर्मिटी मैं यहाँ पर एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो 66 का काउंट होता है उसमें जो फ्रूट साइज आना चाहिए वो 68 से 74 mm का आना चाहिए। और आप यहाँ ये रेंज को ये रेड डॉट लाइन से दिखाया गया है। आप इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो फ्रूट्स हमने डिफरेंट सोर्सेज से लिया उसमें अक्सर में हम इस रेंज को मीट नहीं कर रहे होते। सोर्स बी से हम ये मीट कर रहे थे जबकि सोर्स ए से हम ये मीट नहीं कर सक रहे थे। इसका मतलब है कि जो इशू प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेडिंग से स्टार्ट हो रहा है। जब हम फ्रूट की प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं कर रहे, फ्रूट छोटा बड़ा जा रहा है या डिफरेंट साइज वेरिएबल्स जा रहे हैं और उसमें जो बॉटम लेयर है उसमें हम अक्सर फ्रूट्स को छोटा पैक कर रहे हैं शायद या मुख्तलिफ साइज का पैक कर रहे हैं, स्पेस रह जाती है तो हम एक और फ्रूट भरने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस आती है। So, in short, inconsistencies in the carton packing arrangement, including visible variation in the fruit size distribution and in the number of the fruit per layer across carton, and various forms of the fruit deformation, that is the basic cause. तो यहाँ पर एक दूसरा मैं आपके सामने एस्पेक्ट शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ से जो हमने कंसाइनमेंट भेजी थी उसमें हमने एटलीस्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए ये एक आपके सामने ओवरव्यू है कंटेनर का। इसमें हमने एक डाटा लॉगर को 1/3 ऑफ द स्टोव एंड 1/3 ऑफ द कार्गो हाइट पर रखा और डाटा लॉगर का काम था टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करना कि जो फ्रूट यहाँ से जा रहा है वो क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर स्टोर करके जा रहे हैं या उसमें कोई मसला आ रहा है। और यहाँ पर एक डाटा लॉगर दूसरा रखा जो 2/3 ऑफ द स्टोव हाइट पर मौजूद था। और एक डाटा लॉगर ये जो लास्ट में मौजूद है, आई होप मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, ये जो रेयर एंड पर एक डाटा लॉगर रखा जाता है जो अक्सर एक्सपोर्टर रखते हैं ताकि इंपोर्टर को टेम्परेचर का डाटा लॉगर सारा मिल सके। एक ये डाटा लॉगर हमारे पास मौजूद था। जो हमने ये दो डाटा लॉगर रखे थे बॉक्सेस के अंदर डीप इन द लेयर्स, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों नोट कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में रखा गया था ये जो एक्सपोर्टर रखते हैं ये टेम्परेचर मेजर करने के रखा गया जो बेसिकली जो एयर करंट मूव करती है उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। ये आपके सामने उसकी भी एक प्रेजेंटेशन है। आप ये जो ये वाला डाटा लॉगर है ये फ्रंट लोअर साइड का है जबकि ये सेंटर में जो डाटा लॉगर रखा गया था और ये जो रेयर एंड पर जो एक्सपोर्टर के जरिए डाटा लॉगर रखा गया था उसकी पिक्चर है। आप देख रहे हैं कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज है, आप देख सक रहे हैं कि ये हमारा जो रिफर कंटेनर में फ्रूट बॉक्सेस हैं या फ्रूट्स हैं उनको ये टेम्परेचर एज हाई एज 10 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ रहा है और वेरिएशन है। जबकि जो ये सेंटर में रखा गया था 2/3 ऑफ द स्टोव हाइट उसमें ये कुछ हद तक नजदीक पहुंच रहा है। और ये जो जो एयर चैनल का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ये देख रहे हैं आपके एज हाई एज 11 डिग्री सेंटीग्रेड एज एंड एज लो एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड किन्नू को टेम्परेचर मिल रहा है। वी कैन ऑल सी कि इतना लो टेम्परेचर किन्नू के लिए सूटेबल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किन्नू को स्टोर किया जाए। और ये देख रहे हैं कंसिस्टेंटली टेम्परेचर जो कोल्ड एयर का है वो लो है जबकि मिडल में जो टेम्परेचर किन्नू है उनको टेम्परेचर बहुत हाई मिल रहा है। एक तो ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पर जो मैंने दिखाया गया था ना ये है कि किस जगह कब कहां पर हमारा किन्नू पहुंचा। हमने ये देखा है कि जब भी किन्नू हमारा सरगोदा से कराची और कराची पोर्ट पर होता है तो इसका टेम्परेचर हाई रहता है और इसके बाद जब ये शिपमेंट पे जाता है टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर एयर करंट टेम्परेचर भी नजर आ रहा है
और जब ये दोबारा ये सिंगापुर पोर्ट पर पहुंचा, तो दोबारा इसका देख सकते हैं आप टेम्परेचर हाई होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ड्राई लैंड का जो स्टे है कंटेनर्स का, उसमें कहीं इशू है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर सही तरह से रेगुलेट नहीं किया जा रहा, और इसका टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसे हम मीट नहीं कर सक रहे। और ये फ्लक्चुएशन जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से एज हाई एज 13 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वेरिएशन है ना, इसमें क्वालिटी डिफेक्ट बहुत प्रोड्यूस होते हैं। उसकी एक एग्जांपल ये आपके सामने है। हमने जो कंसाइनमेंट्स मॉनिटर की, उसमें हमने देखा कि इस तरह के डिफेक्ट बहुत कॉमन है, इवन दो एज कंपेयर टू डीके और द डिफॉर्मेशन उतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन ये जो रेंट स्टेनिंग का इशू है, चिलिंग इंजरी का इशू है, थोड़ा बहुत डीके का इशू है, ये बहुत कॉमन थे। इवन आप कुछ फ्रूट्स को देख सकते हैं कि उसमें कुछ डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी नजर आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड फ्रूट आपको नजर आ रहा है। तो ये इश्यूज कहाँ से पेयर होते हैं? ये इश्यूज वही टेम्परेचर मिसमैनेजमेंट से पेयर होते हैं। इसके अलावा हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मॉनिटर किया उन दो डेटा लॉगर से। शिपमेंट के दौरान हम ये रिकमेंड करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% से 95% के दरमियान रहनी चाहिए। लेकिन आप दोनों डेटा लॉगर्स में देख रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इवन हायर देन 95% जा रही है। इतनी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एकोमुलेशन कंटेनर के अंदर या बॉक्सेस या फ्रूट लेयर्स के अराउंड अच्छी नहीं है। इसका एक सबूत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉक्सेस हमारे इंडोनेशिया पहुंचे, उसमें हमने देखा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमें ये इशू, आप ये देख सकते हैं कि ये कार्टन बॉक्सेस की स्ट्रेंथ लूज हो रही है। ये देख रहे हैं, ये डिफॉर्मेशन नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस पिचके हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ आपको ये नजर आ रहा है। इस अब इनसे होता क्या है? इनसे मसला क्या फिर होता है? इनसे मसला ये होता है कि जब बॉक्स की स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, तो सारा प्रेशर किन्नू के ऊपर आता है। और जो पैकिंग का एक मतलब कंसर्न होता है कि पैकिंग को जो लोड बर्दाश्त करना चाहिए वो पैकिंग नहीं कर रही होती, फिर हमारा किनो वो लोड बर्दाश्त कर रहा होता है। इसमें ज़ाहिर है एक कंसर्न हमारा लेमिनेशन भी है कि बॉक्सेस की लेमिनेशन नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि बॉक्स का जो वेट है वो एज हाई एज 10% ऑन बॉटम एंड मिडल लेयर्स, और जो टॉप लेयर है उसमें 15% तक सिर्फ बॉक्स का वेट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 15% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रही है। जब बॉक्सेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें तो ज़ाहिर है उसका फिर वेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये वो हमारी शेयरिंग्स हैं जो हमने किन्नू की जो एक्सपोर्ट यहाँ से की जा रही है, उसमें हमारे जो 3 बिगेस्ट कंसर्न्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। अब अगर ये देखें कि चाइना हमसे ज्यादा बेहतर क्यों कमा रहा है, तो उसको हमने फिर ये देखा कि चाइना में इस वक्त कौन सा मैंड्रीन है जो सबसे ज्यादा मौजूद है। उसमें हमें वोगान नजर आया मार्केट में। और सॉरी रियाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका रेज हैंड ऑप्शन आ रहा है। सर आई थिंक क्वेश्चंस बाद में लेंगे, आप कंक्लूड कर ले रियाज सर इन साहब, दी एंड बाद में कंक्लूजन में। होगा सर। जी मैंने जी, बाद में वैसे भी करेंगे सर। बाद में नहीं लेंगे सर, रियाज साहब बाद में आवाज। लेंगे। जी प्लीज सर प्लीज। तो जी, तो उसमें जो हमने आगे जब इसको फिर हमने ये देखा कि वुगान हमसे क्यों बेहतर है, कहाँ कहाँ पर बेहतर है या कहाँ पर डिफरेंसेस हैं। उन अगर हम वुगान की क्वालिटी को इंडोनेशिया में कंपेयर करें किन्नू की क्वालिटी से, तो मैंने जो 4 बेसिक पैरामीटर आपको बताए, जो इंपोर्टर का जो क्यूईसी परफॉर्म होता है उसमें भी फॉल करते हैं, और जो हमने भी देखे उसमें डीके, डिफॉर्मेशन, चिलिंग इंजरी और सॉफ्टनेस आते हैं। इन एवरी रिस्पेक्ट वी हैड दी हायर वैल्यूज फॉर दी these 4 डिफेक्ट्स। जबकि वोगान में हमें ये चीज नजर नहीं आई। हमने वोगान के भी इंपोर्ट लेवल सॉरी वेयर हाउस से हमने कुछ बॉक्सेस निकलवा और देखा, तो उसमें ना ही हमें कोई डीके नजर आया, ना ही कोई डिफॉर्मेशन नजर आई, ना ही चिलिंग इंजरी नजर आई, और ना ही सॉफ्ट नजर आई। यहाँ पर मैं एक चीज वाजे करना चाहता हूँ कि जो चाइना से वोगान आता है, वो ज्यादा तौर पर एक तो जो प्लास्टिक करोगेशन आती है, बॉक्सेस आते हैं, उसमें आता है। ये तकरीबन 43 से 44 की पैकिंग होती है और 7 kg की पैकिंग होती है। सो देयर पैकिंग डिजाइन इज सच इन सच अ वे कि वो इन चीजों को मिटिगेट कर सके, और जो उनकी पैकिंग है वो लोड स्ट्रेंथ को बेयर कर सके, ना कि फ्रूट को बेयर करनी पड़े और डिफॉर्मेशन आए। तो यहाँ पर हम जो इंपोर्ट लेवल की बात यहाँ खत्म करते हैं। फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स आई विल आल्सो टॉक समथिंग कि जो हमें जब हमने मार्केट का विजिट किया, तो जहां पर हमें वुगान चाइना से इंपोर्टेड नजर आया, हमने ये भी देखा कि इंडोनेशिया का जो लोकल और कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो हायर प्राइस ले रहे हैं। तो हमें मीदान बहुत कॉमन मिला वहां पर, जो इंडोनेशियन मैंड्रिन है मीदान। हमने फिर ये देखा कि वाई इट्स गेटिंग अ हायर प्राइस एज
कंपेयर टू किनू, चलिए वुगान तो ले ही रहा है चाइना से जो इंपोर्टेड होता है, हमने फिर मिदान को भी कंपेयर किया, और जब हमने उसका क्वालिटी कंपैरिजन किया तो हमें ये चीज नजर आई कि ब्लेमिशेस इवन मिदान में ज्यादा है, इवन किनू से ज्यादा है, वुगान में तो है ही थोड़े। स्किन कलर मिदान का काइंड ऑफ ग्रीनिश येलो है, नॉट एज यूनिफॉर्म एज वुगान एंड किनू हैज। साइज भी कंपेरेबल है, जिसमें जो है ना किन्नू के साइज से वुगान और बिदान बेहतर हैं, लेकिन जाहिर है ये चूंकि ग्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, इसमें हम ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। मजे की बात की जो सीड्स हैं वो दोनों में हैं मौजूद। हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान का सीडी किन्नू compete नहीं कर सक रहे, नहीं, अगर ये हम इंडोनेशिया में एट द टाइम ऑफ विजिट देखें तो वुगान और बिदान दोनों ही सीडी फ्रूट्स हैं, और इन दोनों की प्राइस रिलेशनशिप क्या है क्वालिटी का वो डॉक्टर टीम आपके साथ शेयर करेंगे। बट बोथ आर सीडी, नो, इवन दो सीड थोड़े कम होते हैं लेकिन सीडी हैं, इवन दो compete कर रहे हैं। जूसी परसेंटेज में भी कोई इशू नहीं है। मजे की बात टीएसएस में कोई फर्क नहीं है, टीएसएस में भी वो इक्वली गुड है, बल्कि मैदान की टीएसएस थोड़ी कम है, लेकिन जो रियल डिफरेंस है दैट इज इन द एसिडिटी। जो एसिड लेवल है वो किन्नू में सबसे ज्यादा था, फॉलोड बाय वुगान, और मैदान में बहुत कम एसिड लेवल था, जिसकी वजह से जो एक शुगर एसिड का रेशो का ब्लेंड है ना, जिसे हम टेस्ट कह सकते हैं आम लैंग्वेज में, मैदान में वो सबसे अच्छा था। तो वी बिलीव कि दैट वाज द बेसिक रीजन कि जिसकी वजह से इंडोनेशिया मार्केट में मैदान वाज abundantly present and it was getting a very handsome price from the Indonesian consumers, followed by Wugan and then Kinnow. तो जो हमारा यहाँ पर टेक अवे है, दैट इज माय लास्ट स्लाइड, हमारा जो टेक अवे था वो वहां पर जो हमने लर्न किया वो था कि हमें वॉल्यूम बेस्ड एक्सपोर्ट की बजाय क्वालिटी ड्रिवन एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, और उससे में हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडोनेशिया का कंज्यूमर क्या चाहता है हमसे, किस तरह का टेस्ट, किस तरह की क्वालिटी चाहता है, और इंपोर्टर के क्या कंसर्न्स हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन मैंने आपको इस साथ एक मेजर कंसर्न शेयर किया, और कुछ इश्यूज जो बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं जिसमें रेंट स्ट्रेनिंग वगैरह या डिके वगैरह के इश्यूज आ रहे थे, और जो टेम्परेचर मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो इशू बहुत ज्यादा थे। तो स्वीटनेस रिलायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट लेवर इन इंडोनेशियन मार्केट। स्वीटनेस, फ्रूट में स्वीटनेस होगी, हमारा फ्रूट ज्यादा कीमत का बिकेगा। दूसरा, हमारे किन्नू में बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसका एसिड लेवल बहुत कम होना चाहिए, और जाहिर है जो एसिडिटी लेवल है काफी हद तक वो मेच्योरिटी से ताल्लुक रखता है। हम नॉर्मली जो ये नवंबर से हार्वेस्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एसिड लेवल ज्यादा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता है। अगर हम इंडोनेशिया को टारगेट करना चाहते हैं तो हमें ऐसा किन्नू वहां भेजना पड़ेगा जिसमें शुगर एसिड रेशो हाई होनी चाहिए, यानी कि एसिड रेशो कम ही होना चाहिए। और ये जो कंप्रेशन डिफॉर्मेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। यस, वी कैन अवॉइड इट बाय बेटर ग्रेडिंग, पैकिंग डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्गर कार्टन्स। और दूसरा, कोल्ड चेन डिसिप्लिन है। हमने देखा कि कंट्रीज इस चीज को बहुत ज्यादा मॉनिटर करते हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा विजिलेंट होते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है ड्यूरिंग शिपमेंट्स वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। जो हमारी थर्ड पार्टीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें पे करते हैं कि टेम्परेचर मैनेजमेंट हमारे लिए स्ट्रिंजेंट रखी जाए। जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है वो हमें अंटिल द एंड वही एग्जैक्ट मिले। लाइकवाइज जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज ना करने करे, हम जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो इस तरह से रखें कि हमारा जो किनू है वहां पर अपनी बॉक्स स्ट्रेंथ को मेंटेन रख सके। तो ये हमारी कुछ क्वालिटी रिलेटेड लर्निंग थी जो हमने इंडोनेशिया से ली। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर टेम, जो you can Dr. Tim, continue your presentation, like you can take more 10 to 15 minutes now, and then we can take questions from the audience. Over to you, Okay, Dr. Tim. thank you. So can you see the presentation, everyone? Yes. Yes. Thank you, everyone. Particularly thank you a lot of familiar faces we met before, like old friends. Finally, we met together, and thank you the privilege opportunity to present the research of Pakistan Kinnows
in the Indonesia market. My name is Tim Sang, if someone probably don't know. I'm a senior research fellow at the University of Queensland, Australia. I've been Pakistan for more than 30 times the last 20 years, from mango, vegetable, and peanuts. And today I'm talking about the 3-point, the objective 3-point. One is the key competitors of Pakistan, in the Jakarta market. What each of the competitors' selling point, the features of the fruit. Then second point, we're looking at the performance Pakistan Kinnow in the market, the positions. Then we look at the key issues, marketing issues, and the challenge. So there are 4 points I like to go through respectively. First, I want you to know there's a key two competitors in Indonesia market for Pakistan Kinnow during the harvest time. Although Australia have a mandarin export to Indonesia, but the season is different. They normally start export later May, then June, July. So it's nothing to do with us. The season we supplied, Pakistan season we supplied, they have only 2 competitors. First one is China. China's mandarin. So what's China's mandarin's key feature in the market and the selling point? First, the photo you can see, the picture see, they have different type of packaging used in the retail display. You see paper wrapped, you can see the plastic wrapped, you can see the gift box, also you can see the loose sale. And the price, secondly, the varieties. So here, I just want to say it's more conservative. It's more than 10 different varieties. Actually, it's probably 20 because Rahil knows. So we talked to the importer, he said a lot. So at least we cross 10 during our visit. Different size, different color, some probably hybrid, different hybrid with orange. That's the second feature. Third is the price. They are expensive. I mean, compare with the most expensive in the market. The second, probably I lost another one. The last one is their quality, consistency. Doesn't matter what variety, the quality always consistent. So that's probably their product feature and selling point. And they have a consumer loyalty. The reason because if you see the photos on your left, we are talking about the price. Looks not nice, but wrapped with paper, you see the price, you're shocked. Because of variety. This variety, people believe is sweet. You see the price. It's about $9 per kilo. Very expensive. The second competitor for Kinnows is local Kinnows. They call Indonesia Madden. What's Madden's feature? First, the only one variety, predominantly Madden.
And the retail price is $2 to $3 US dollar per kg. Appearance, less visual attractive. You can see these three photos show the appearance of Indonesia Medan. They not look as good as our Kinnow. Appearance not attractive. Last one, the feature is low acid. When you taste, it's just sweet, little bit sweet, not very little, not feel sour at all. So then is our Kinnows. We only have a single variety. I think that looks good. You see the photos here, but a low price. Compare with the Chinese, $4, $5, $5, $6, and the local, $3, $4, or some even $5. But we only got 1.2 to $1.8 per kilo. Last is limited market penetration. What that means, we visited the supermarket, hypermarket, grocery, wet market, wholesale market, and some supermarket have Kinnow, some wet market have Kinnow, some do not have Kinnow. So which means in all the markets we visited, they always have Chinese Mandarin, they always have local Medan. But from our visit, probably 40-30% of the market, include retail outlet, do not have Kinnows. It's interest. We have to ask why. So market share, retail price of the three countries. Indonesia local Medans take over 90% at least. I have a conservative data about the production of Indonesia Medans. Is about 2.5 million ton. I only use 2 million ton. That's consumed totally in this country. The price $2 to $3 per kg. And that's 2025. China import 90,000 to 95,000 ton. Price from $3.3 to almost $7, and take less than 5% of the market in the season of Pakistan harvest season. And Pakistan 2025, probably PhDC have the accurate data, is about 40,000 to 60,000 tons export to Indonesia. Take about 3%, less 3% of the market share. Price is very low, 1.2 and 1.3. You probably start thinking about a lot of questions come to your mind, a lot of thinking, why this happened, why this happened. First, we look in the market, we through this description of the three Mandarin from three countries, we clearly see China lead the premium segment in Indonesia. They got premium price, and which indicates the strong consumer trust in the quality, appearance, and the sweetness. That's what we interview the consumer, the information. And local Indonesia Medans sit in the middle in terms of price, around about $2, $3. They dominate the mass market because they are
affordable and widely available. Pakistan Kinnow position at the low end, selling US dollar 1.2, 1.8 kilo. So what that means? We compete mainly on price. Then, what's the key factor that contribute Pakistan's Kinnow's weak market position in the market? Probably you all start thinking about why this happened. So we also are think about why this happened. Is that the quality or fruit size? First question, is that fruit size? You know, in the country, domestic country, the fruit price associated with the fruit size. I'm sure everyone know. Good size, A grade, have better price. Small, mid-size fruit have a second price. Small fruit always have a low price per kg. But in the Indonesia market, we found it's not the case. The photos I taken is from the wholesale market. There's only one big wholesale market, this wholesale import fruit. You see the 3 boxes from Kinnows from Pakistan. Each box, the fruit number is different. First box on the left is 60 fruit. Middle box, 66 fruit. The box means fruit smaller. And last box on your right is 72 fruit. What's the price, wholesale price? You tell me what's wholesale price different? No different. All is 150,000 rupees per box. That's marked for sale in the market. So clearly, fruit size not affect the price. I hope you see this evidence. Fruit size is not the reason we make our price so low. So what's another reason? Appearance. So we visited the wet market. You see the fruit wet market close to the wholesale import fruit wholesale market. You see the price. You see the appearance. On the first row is the wet market. The price Kinnow is 20,000. Madden is 25,000. That's the retail price close to the wholesale market. Looks appearance. Which one looks better? You can tell me which one looks better. Of course, Kinnow looks much better. The size, color, unit color. You see the Maddens. Green, mixed, blemish. Why is it got high price? 25,000 per kg. Same result is the supermarket. You see the Kinnow, we're talking about 100 gram, means 26,500 per kg. What's the Madden local? Nearly 50,000 per kg. Nearly double. You look at the appearance. Which looks better? Can you see the fruit? The first photos on your left is Kinnow. Middle photo is Madden. You see the size, you see the color, size, different color. And the photos on your right bottom also is Madden. You see the price, 40,000. It's much higher than the Kinnows. Why? Why? It's not the size,
not appearance. Is that because what's the reason? Is that people cannot afford? Not affordability? Clearly is not. Because consumer purchase Mandarin 20 times more in volume than Kinnow, despite Mandarin's price is high. So clearly it's not the price. The people do not have money to purchase. They have money to purchase local, but not willing to pay good price, not willing to buy more Kinnows. Why? So this is the question we constantly ask through our visit. So the question we ask like this: why are consumers willing to purchase more Mandarin, and pay a high price compared to Pakistan Kinnows? That's the question we keep ask. We ask retailers, 12 retailers, and we ask how many consumers, 15 consumers randomly. And the response is exactly the same. They said the Kinnow is sour, high acid. So the sour taste of the early harvesting fruit clearly has negatively impact the Indonesia market perception of Pakistan Kinnow. You know, if your fruit harvest in November, start sending to Indonesia beginning of December. When fruit arrive there, when people start buy, and this taste sour, do you think they'll coming back to buy again, even your fruit start getting sweet? No. If people have purchased once, they not come back. Other people come, their friend, relative said, how's the Kinnow from Pakistan? They said, oh, sour, because we taste sour. Then they not come back. They not even willing to try in the later season, even if fruit start become sweet. That's the key problem. We clearly see consumers in Indonesia generally try to avoid sour taste. Kinnow has a market perception of being sour in this already set up in the market. Kinnow a high acid compare Indonesia Maidens and Chinese Mandarin. Even when the time we're in Jakarta, you already see the data. The bricks, the sugar content of our Kinnows is still quite good, even high than local Maiden. However, we have a slightly high acid level. Still a little bit slightly high. But during our visit, we can see the issue of acid issue start become less, because the time we arrived there is February. So the fruit probably harvest in the end of December start getting sweet. So sorry, is that. So the key takeaway, the message, we can see there's strong potential to expand export volume, and improve the price, subject to the limitation of the supply of sour fruit in the early season. How can you do it? This is a challenge. I don't know how you can try to stop sour fruit sent to the Indonesia market in the early harvest season. How can you do it? Because that will change if you can do it, that's totally changing the image of
Kinnows being sour, then people start coming back and to buy more. Then you can see the potential of increase the volume and increase the price is there. Is there. People have money. People can consume more, but they don't want to buy sour fruit. So that's my presentation. Thank you. Now come to the question time. थैंक्स डॉक्टर टिम, योर प्रेजेंटेशन इज सो कॉम्प्रिहेंसिव। तो अभी पार्टिसिपेशन से गुजारिश है, अगर आज की वेबिनार के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से अगर कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर टिम भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर हिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज साहब, आप सवाल करें सर। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी जी। Yes. मैं उर्दू में कर लेता हूँ, अगर इंग्लिश में नो नो इशू फामी। अच्छा, इसमें सर ये है कि डॉक्टर रहील साहब ने, डॉक्टर टिम ने एक बहुत अच्छी एफर्ट की है। हमें कमो बेश हम भी इस मार्केट में कोई बड़े अरसे से तकरीबन 13-14 साल से काम कर रहे हैं। हमें कमो बेश यही मसाइल आए हैं। इनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने तौर पे हल भी की हैं, उनको हमने उनका मसाइल का हल ढूंढा है और उन्हीं की वजह से हमें फिर मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस भी अच्छी मिली है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, इसमें सर मैं एक तो ये शेयर करना चाहूँगा कि जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे किन्नू की डिफरेंट डिसीजेज के हवाले से, ये हर साल वेरी करती है क्योंकि हमारे पास कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक आ रहा होता है। कुछ मेरे सजेशंस हैं, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, तो ये होपफुली ये यूजफुल होंगे सबके लिए। हर साल हमें ना डिफरेंट मसाइल का सामना के अंदर पैदा करना पड़ता है। सारा डिफरेंट मसाइल आते हैं। पिछले साल हमें ये मसाइल नहीं आया था जो इस साल डॉक्टर साहब ने शेयर किए हैं, क्योंकि पिछले साल क्रॉप स्ट्रांग थी, किन्नू मजबूत था। इस साल किन्नू क्रॉप के अंदर इश्यूज हैं। होता ही है कि पिछले 4-5 साल के अंदर ऑफ सीजन के अंदर जो वेदर इफेक्ट काफी आता है इस किन्नू के ऊपर, जिसमें रेन्स आ गई, हेल स्टॉर्म आ गई, डिसीजेज आ गई। किन्नू हमारा बेसिकली बीमार है किन्नू, तो ये मसाइल तो आने ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमें जो इशू आता है ना जी, जो आ रहा है कि जी अर्ली हार्वेस्टिंग का, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ नहीं है, ये अर्ली हार्वेस्टिंग का इशू हमारी तमाम मार्केटों के अंदर है। हाल तो हमने एक अपने ऊपर एक लगाया हुआ है, एक किस्म का बैन लगाया हुआ कि हमने 1 दिसंबर से पहले एक्सपोर्ट नहीं करनी। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 15 नवंबर से ही हार्वेस्टिंग करके स्टार्ट कर देते हैं। उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हमने अपनी मार्केट बढ़ानी है, अपनी मार्केट में चीजें बेहतर करनी है, तो उस अर्ली हार्वेस्टिंग को रोकना जरूरी है। इसके लिए पीएच डेक एक अच्छा रोल बना सकता है कि जी एक्सपोर्ट चलो 1 दिसंबर से है, असल कंट्रोल उसका अर्ली हार्वेस्टिंग का है। उसको पीएच डेक की तरफ से कोई चीज या कोई रेगुलेशन या कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरा, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि जी टेम्परेचर वेरिएशन का, असल मसला टेम्परेचर वेरिएशन का ये है जो हमने फेस किया था, फिर हमने उसका हल भी निकाला कि यहाँ पे मोस्टली शिपमेंट जो होती है, कोई मेरे हिसाब से 60-70%, क्योंकि सीजन का स्टार्ट होता है, लोग कोशिश करते हैं कि जी मेरी शिपमेंट जल्दी पहुंच जाए और मैं पहले पहुंच जाऊं, पहले मैं सेल्स शुरू करूं। लोग उसको प्री कूल नहीं करते। यहाँ पे काफी एक्सपोर्टर्स हैं, उस शिपमेंट को प्री कूल नहीं करते, विदाउट प्री कूलिंग उसको लोड कर देते हैं और रास्ते में फिर उसके प्रॉपर उसकी कूलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं वहाँ पे रास्ते में इस शिपमेंट के साथ। एक तो ये मामला है। दूसरा सर, एक टेक्निकल पॉइंट है जिसमें डॉक्टर रहील साहब हमें शेयर कर सकते हैं कि आया कि नहीं, वो उसको ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। हमने तो 4 डिग्री पे टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब जहाँ पे शिपमेंट, वहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर टेम्परेचर है बड़ा हायर साइड पे है, और दूसरा उसके अंदर मॉइस्चर भी है उनकी क्लाइमेट के अंदर। जिस वक्त शिपमेंट पोर्ट से निकलती है, पोर्ट से लेके वेयर हाउसिंग तक या उनके पैक हाउस तक या कोल्ड स्टोरेज तक, नॉर्मली होता क्या है कि वहां पे उसकी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, शिपमेंट पहुंच जाएगी। वो अगर डॉक्टर साहब ने चेक किया कि नहीं, कि हमें ये कंप्लेंट आई थी, तो हमने फिर अपने कस्टमर को फोर्स किया कि भाई आप जब पोर्ट से शिपमेंट लेंगे तो अपने वेयर हाउस तक, जब आपने इंपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट से शिपमेंट उठाई है, तो अपने वेयर हाउस तक उसकी प्री कूलिंग मुकम्मल करें। उसके बाद हमें ये मसाइल नहीं आना शुरू हुए।
यानी जो कूल चेन ब्रेक हमारे एंड से भी है, उनके एंड से भी है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। इससे हमारे मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे जी, इसकी जो कोल्ड चेन के हवाले से। दूसरा एक हम लोग ये करते हैं कि जी जो ट्रेडर्स लोग हैं वो वेंटिलेशन का ख्याल नहीं करते। हमारे पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट है, हम उसको देखते हैं कि जी इसकी कंटेनर की वेंटिलेशन हमने सेट की है कि नहीं की। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं कि जो वेंटिलेशन को बॉदर नहीं करते, वो भी एक मसला है। जहां तक सर डी शेप की बात करें, डी शेप में हमने ना एक नई यहाँ पे ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 2 साल से, कि पहले हमारा जाता था 10 kg का बॉक्स था, 10 kg नेट वेट और 11 kg क्रॉस। तो पिछले कुछ अरसे से कुछ एक्सपोर्टर्स ने उसका वेट कम कर दिया है, बॉक्स ही छोटा कर दिया है। यानी 9 kg वेट आ रहा है, 10 kg क्रॉस आ रहा है, और फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा लोड करते हैं कंटेनर के अंदर, जिसकी वजह से किन्नू के अंदर डी शेप के मसाइल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यानी हमारे इस साइड में मसाइल हैं काफी ज्यादा हैं। ये सर मेरी 2-3 सजेशन थी सर। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहील साहब, सर इसके ऊपर कमेंट करिएगा। जो रियाज साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, जी इसके बाद फिर हम अगला सवाल ले लेंगे सर। sure. Thank you very much, Riasa, for sharing your information. For the convenience of Dr. Tim, let me first translate that into in English. Dr. Tim, Mr. Riaz, you know him very well. He's from Al Rafiq. He was talking about that the issues, that the quality issues that we have shared. These issues vary from season to season. Some time there are some other issues that appear during the next season. Early harvest has an issue in almost all markets. Some traders start selling in mid-November. There is a need to stop or reduce early harvest, possibly by PHDEP also. Temperature variation is a common issue in shipments. He also acknowledged that most shipments are sent without pre-cooling. So pre-cooling is very important if we want to maintain the temperature. And next, he said that temperature is not properly maintained by the warehouse, that the importer's warehouse. So there is a need that we should also talk to the importer that he should take the responsibility to maintain the temperature when the container is at the port destination port. And then he said that yes, ventilation is not properly maintained by the most of the traders. That should be considered. And deformation is because of the size. I'm sorry, Riasa, I got a internet distortion. Maybe you were talking that there is a size issue also, the proper grading issue also. My comment to few of your things is very simple. I really appreciate that the issue is already understood. The problems are there, and traders and exporters already understand these problems, that these are the problems. If we do understand the problems, definitely we're trying to resolve these issues also. हम कोशिश करेंगे मिलके के इन issues को resolve करें. At least हमारे दरमियान एक common understanding है कि ये issues exist करते हैं, और अब इन issues का हमारी international market पे क्या impact हो रहा है, इस चीज की हमने वाजे कुछ evidence भी आपके साथ share कर ली है. टेम्परेचर का सर जो हमने रियासत देखा है ना, वो तकरीबन 4-5 दिन तक वेयर हाउस पे कंटेनर रहा, इंपोर्टर के पोर्ट पर क्लियरेंस नहीं हो रही थी. हमने वो भी चेक किया, लेकिन जो मैंने आपके साथ एविडेंस शेयर किया ना, वो है कि सरगोधा से कराची और कराची पोर्ट पर जो हमारा कंटेनर रुका रहता है ना, उसमें हमारे साथ हमने देखा कि टेम्परेचर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, और टेम्परेचर ऊपर ही रहता है. और ये हमने इस साल नहीं, हमने पिछले साल और उससे पिछले साल हमने एक मॉरिशियस पोर्ट लुइस की कंसाइनमेंट भी मॉनिटर की थी, और एक और इंडोनेशिया की कंसाइनमेंट भी मॉनिटर की थी. हम ये 2-3 साल से देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारे लिए हमेशा एक इशू रहा है. और जिस तरह से ये सिंगापुर पोर्ट पर पहुंचा, अगेन टेम्परेचर का वहां पर भी इशू था. तो वेयर हाउस जो डेस्टिनेशन पोर्ट है ना, और वहाँ वेयर हाउस में जो टेम्परेचर क्या है, यस हम उनसे बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन हमें थर्ड पार्टी से जो हमारा ट्रांसपोर्ट एजेंट है उससे भी बात करने की जरूरत है कि टेम्परेचर मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और एट द एंड हमें डाटा लॉगर्स देखने चाहिए कि टेम्परेचर का कंसर्न कितना हमारे लिए सीरियस है. तो रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स. विल डेफिनेटली डिस्कस मोर अबाउट दिस. अगर कोई मजीद क्वेश्चन है रियाज साहब की तरफ से जो मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सर बाकी ऑडियंस को टाइम देते हैं, इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस कर लेंगे सर। श्योर श्योर. However, can I ask सर one thing? जी सर, श्योर इसके सर, श्योर. क्या क्या ये पॉसिबल है कि हम अर्ली जो वैरायटी की बात भी कर रहे थे ना, राइट साहब ने बड़ी यहाँ बात की थी, हम एक ही वैरायटी पे हैं, वेयर चाइना डिफरेंट वैरायटी वहाँ सेंड करता है. इज इट पॉसिबल कि हम अपना अर्ली फ्रूटर जो है
अर्ली शूटर जो उसकी पॉसिबिलिटी है वहाँ ये प्रॉब्लम है। रईस साहब आप भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा, और रियाज साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये मार्केट को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। रईस साहब आप भी इसके ऊपर बताइएगा कि क्या हम फ्रूटर अर्ली को टेस्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया में? कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पे? सॉरनेस कम होगी, सॉरनेस कम होगी, दैट्स माय Yes. Azim sir, ऐसा है कि so Dr. Tim Azim was saying Dr. Azim was saying about possibility of exporting our futures early Mandarin to Indonesia. मेरा सर कंसर्न ये है कि यस किया जा सकता है, टेस्ट के हवाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो सॉफ्टनेस है या जो मतलब इसकी जो सॉफ्ट स्किन है, दैट माइट बी एन इशू, क्योंकि हमारी इस वक्त जो पोस्ट हार्वेस्ट सप्लाई चेन है ना, वो थोड़ी रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त करती है। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई चेन को थोड़ा सोफिस्टिकेट कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग को बेहतर कर सकें और अपनी जो पैकिंग को थोड़ा यूनिफॉर्म कर सकें। देखें, दुनिया में सॉफ्ट फ्रूट बहुत एक्सपोर्ट होते हैं और बड़ा एमिकेबली एक्सपोर्ट होता है, लोग इवन स्ट्रॉबेरीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नो इशू इन दैट। लेकिन उसके लिए हमें पहले थोड़ी अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा सोफिस्टिकेट करना पड़ेगा। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी, ओवर टू यू रियाज साहब एंड डॉक्टर टिम, योर कमेंट्स प्लीज ऑन दिस। Dr. Sir, in my opinion, there are a lot of early varieties in the international market. So early fruit from Pakistan is not feasible because its shelf life is not good, and we will not get good prices with early fruiter. The major issue with this variety is the shelf life. By year we can do, but by year cost is very higher side. So we have to focus on the late varieties, starting from March, April, May, June, which will be good for the Pakistani citrus sector. Thank you, Riaz Saab. Dr. Tim, would you like to comment on what Dr. Azim have shared with us Yes, about fruit allergy? a key concern, because it's very interesting. We particularly we visited the consumer in the supermarket on the fruit, because it shocked us. So Rahil and Asim know, three of us, we found a couple buy the Chinese mandarin. The price is $9 per kg. We are curious. The reason, because the fruit not looks nice appearance. The fruit is soft. You touch it soft. It's not have some blemish. Not nice. We ask why you pay so much, because Kinnow here is less than $2. Why you buy this one? Costs you $9 per kg. What he said. This fruit definitely sweet, not sour. So you know the problem. If we have a early fruit scent is even one, or because we have several exporters, if some container have a sweet or have a sour fruit, how much that will have negative impact of the consumer, because once they have spread out rumors the Pakistani Kinnow is sour, people stop buy. That's the key problem, because I don't see the appearance is less than their fruit. So how are we going to do it? How can we stop sending the sour fruit from some of the containers to the Indonesian market? That's a key issue. I don't know how to solve it per PDC, or if have some developed mechanism to check if the fruit acid level is more than this. We just sell to the domestic, not send to the Indonesia. The sugar, the bricks don't have to be very high.
because our bricks is 10 above is good enough. The key problem is the acid level. How can we stop this high acid level fruit in the early season to Indonesia market? That's a challenge, I see. From my personal perspective, I don't know how to solve it. This PhD probably have better idea than me. Thank you. How can I say, although I think can I say, can I say one thing from PhD Yes, side? sir. Yes, sir. You may contribute, I think sir. we need to I fully agree with Riyasa, and possibly we need to work with the exporter, and we need to send some trial shipment of early fruiter as well as a few other oranges, because Pakistan also now started producing many types of oranges as well, and they are also available during early season types of oranges can also be. I think potentially we need to explore a little bit more. If I can see the main issue is acidity. So if some varieties we have in Pakistan, we need to really work more on it. Potentially, we can organize a workshop, maybe another webinar, specifically understanding this issue. It is everywhere. It's not only in Indonesia. I can understand this sourness or acidity. So, and then accordingly, targeting our interventions, looking at well, we have more than 150 varieties, in even in you see Sargoda. Sugar Research Institute, Citrus Research Institute. We hired, and they have also done multi-locational trial as well. Potentially, I think this area need to be further explored, and with our exporter, we can manage some trial shipment as well, just to know, get first-hand information how it performs. Early fruit is quite big size. I mean, quite. We have a volume as well, and as compared to other you see oranges type of variety. This is a potential area. This sourness and acidity is a potential area that need to be considered in our future plannings. Citrus survival and all that is what's going on. Currently, a lot of projects, huge projects, government of Punjab is undertaking. Maybe we need to maybe you see, this issue we need to discuss at even Punjab government level, because Kinnow is mainly coming from the Punjab. So I think we need to take up this issue for export as well as for alternative as well as for resolving this issue. How we can do it. Anyway, these are my few comments, and it's a future issue. Maybe if someone want to respond, okay. Otherwise, we can organize another special session on this issue. Thank you very much, sir. Moving forward, I would like to invite Abdurrahim Khan Sahab to have your question, please. Thank you, Howard, and thank you, PhDec, who give me opportunity to share my knowledge and findings with all of you. Dr. Tim presents the issues very positively. We need to talk about Kinnow, not a citrus. And we have a number of varieties in citrus. But in case of Kinnow or mandarin, we have very limited varieties, Kinnow and fruit early. Australia provides us some varieties of citrus. There is only one mandarin variety that is named Daisy. I think, as Dr. Tim said, acidity level in the varieties is the character of variety. I think, as per I have my knowledge, it is impossible to control the acidity level in the varieties. But if we use potash in extra dose, it may be possible. But it is not my subject, so I can't more discuss it. Secondly, Dr. Rahil said that there is a problem in grading. That's the grading is a not problem.
problem is in filling of the carton. Their labor tried to fill the carton with pressure, and which ended result is reshape the shape of Kinnow. And the size of carton with respect to the weight of carton needs rationalize, but we less consider about it. There is need to accept the principles and other rules of supply chain. As Mr. Riaz mentioned, that we do not have pre-cooling, blast cooling to pre-cool the produce for export. Yes, it is true. And I am sharing it since 1992, praise use air blast cooling chambers. Presently, one or two packing house at Sargodha, which they have a air blast cooling unit. There is need to brainstorming with technical, professional, with the people at job and the farmers to get a better conclusion of the issues. Here we discuss only issues, but still we are looking for the solutions. Who will provide us the solutions? Citrus industry, citrus supply chains, there are a lot of work has been done. More than, I think, 3 or 4 international donors provide us supply chain project in citrus. But still we are looking for better results. Our quality at destination becomes deteriorate. Why? Because I asked some exporters, please provide me the data logger to check the data from the big A to Z. They unable to provide me the data logger. There's excuses in many ways. We are making just excuses, and we do not accept the responsibility. If we accept the responsibility, then you can get a better way. A single person cannot do or improve the quality, quantity, and the other parameters regarding the supply chain issues. There is need brainstorming. We are avoiding brainstorming. Why? I don't know. If we want to get a better way, then there is a need to share the knowledge, come up to brainstorming. We need to improve the cotton to avoid the V-shaped Kinnows. We need the develop correlation to manage the temperature inside the container through ventilation system, through temperature system. Mostly people don't know how to manage the ventilation system. Which percentage of ventilation is required during cooling and which percentage is required during transit time. There is need to check the quantity, to check the temperature and the ventilation correlations. These are my some suggestions or questions or knowledge which I want to share you. Thank you very much, sir. Thank you, Khan Sahab, for your contribution, for sharing your expertise on the citrus and the Kinnow issues from your past experience. If Dr. Raheel Anwar or Dr. Tim wants to add something, please you may. Otherwise, we may take the next question. Not for me.
Yeah, not to me. I just want to endorse the Abdul Rahim Saab. Suggestions are very valuable and very important for us. First, when we really understand that these are the issues, and yes, the strategies need to be devised, and we can mutually work together to develop the strategies to mitigate these issues. So, Abdul Rahim Saab, we are in contact, and definitely we'll meet again. At this forum, at least we understand that the problems are very much common and very much prevalent and definitely serious issues. Definitely, we'll sit together and we'll see that what we can do to improve our stress, improve our export. Just one critical point is that yes, the problems are very much common almost for every exporter, but there need to be an exporter who can come up with a better model so that it can serve as an example for other exporters also. Otherwise, at this moment, everyone is doing the same thing, and the importer in Indonesia don't find any good exporter from Pakistan to whom he can get good fruit. We need to come up with a strategy so that we can sell good fruit and make a brand of Pakistan. Thank you. Thank you very much, sir. Totally agreed with your point of view. जी, और over to you, Khawar किसी साहब. सर थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, अपना माइक खोल के हैंड रेज करके या जैसे आपको बेहतर लगे। फोरम इज योर्स। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं जी। जी अजीम नकवी साहब, प्लीज सर अपना माइक ओपन करिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। I am Azim Haider Naqvi from Kabi, Pakistan. I'm resident in the Sindh regional office. Uh, mm, First of all, I'm very thankful for the opportunity to be here. Dr. Rahil Anwar and Dr. Timson really presented a very comprehensive presentation. I have only two questions, one from Dr. Rahil and one from Dr. Timson. First, from Rahil, I just want to know that because as Dr. Abdul Rahim be already said that grading is not the issue because but the result which shows that there is not uniformity in the boxes and there are different number of fruits in the different boxes, so which we refer to the grading. But mostly in Pakistan, I think the grading is done by the mechanical process or the manual process. So my question is that are these what they are the sample they have taken was through the manual grading or were packed through the mechanical packing? So this was the question with Dr. Rahil. And the second question is from Dr. Timson. Dr. Simpson, what we have seen that the major problem of consumer preference, what you refer is the sourness of the bitterness or sourness of the Kinnow, Pakistani Kinnow, and that is related to the early harvesting. So I just want to know because what we have seen here that farmers mostly go for early harvesting to fetch the better price, the higher price. As in the early season, most of the vegetable and fruits have high prices. That's why farmer tend to do the early harvesting. So is the same case in Kinnow that farmer are doing early harvest just because of the good price in Pakistani market because farmers are getting prices from the Pakistani market. So what is your comment over it? Thank you very much. So Rahil, answer your first question, or I go answer my question? राहील I'm साहब, sorry. अजीम नकवी साहब ने पूछा है कि जो आपने सैंपल देखे वो मैकेनिकल ग्रेडिंग के जरिए गए हुए थे या मैनुअल ग्रेडिंग के ऊपर गए हुए थे, उसके ऊपर बता दीजिएगा। जी, पाकिस्तान में जितनी भी ग्रेडिंग होती है वो मैकेनिकल ग्रेडिंग होती है। कॉम्स के जरिए उसके तकरीबन 8-10 ग्रेड बनाए जाते हैं, उसमें मैनुअल ग्रेडिंग नहीं होती। तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड वाज फ्रॉम द जी अजीम जो साहब, यू गॉट ओके जी 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 जी, तो ओवर टू इसमें यू ग्रेडिंग डॉक्टर। एंड पैकेजिंग की भी बात की, पैकेजिंग मैनुअल। अलीम साहब ने जो बात की कि यस, ग्रेडिंग तो मैं वो यस। है, क्या पैकेजिंग जो है वो मैनुअल है या
जो है वो Okay, the packaging is always manual. At least to my knowledge, there is no mechanical packing system in Sargodha region. लेबर ही पैकिंग करती है और उसमें बहुत सारी इश्यूज भी आती हैं। जैसे अब्दुल साहब ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि पैकिंग में बाज दफा वो जो किनू की ओरिएंटेशन है वो सही नहीं रखते, बाज 3 और 4 की लेयर के बजाय 4 और 3 की लेयर्स बना देते हैं। तो यस, मैनुअल पैकिंग होती है और वो एक हमारा इशू है। पैटर्न पैकिंग जो वर्ड ओवर चलती है वो मैकेनिकल होती है और उसमें इस तरह के इश्यूज नहीं आते। ओ जी, ओवर टू यू डॉक्टर टिम रिगार्डिंग अजीम क्वेश्चन। Yes, this is the case. Most of country which harvest for the early harvest get better price. Normally it's for domestic market. I think the same in Pakistan. You see, if you can supply the fruit in the November price, because the supply and demand, if less supply, more demand, the price goes up. So which is the sacrifice the quality for the price. So farmers harvest to sell better price, even the quality is low, because market willing to pay high price for low quality in the early season because demand, the supply is very limited. However, in terms Indonesia, so this is a good question. We are not sure. Probably exporter should know. In the early season, do we get a better price from importer on Kinnow, better than because Indonesia, the importer export have a good communication. Do we get good export price in the early harvest season from Indonesia import? So that's piece of information I really don't know. We need to explore it because really we don't know if the importer get a better price much better price in the early harvest season, or because they try to maintain the business relationship, even the price is not much good. They still, because the import I've tried to keep this season supply, keep the relationship, so I still send the fruit there, even less profit. So I have no idea about this question. Probably we need to explore this. Probably importer, probably exporter, probably know more about your question. Thank you, Asim. Thank you, Dr. Kim. Mr. Reyes wants to add something, I think, if you, Ji, Reyes bhai. Am I audible, Power sir? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। Power sir, in all this discussion, I would like to suggest only two things. If we can manage these two things, we will have solution for multiple problems. One thing is we are talking about again and again is the early harvesting. Unfortunately, in Pakistan, not in Kinnow Mandarin, in every agricultural produce, uh, growers are engaged in early harvesting. Either it's now you can observe watermelon, you can observe melon, you can observe strawberry, you can observe mango season coming, you can observe mangoes as well. Everyone is going for early harvesting. They think that through early harvesting they will go to the market and first 3, 4, 5 days they will get the better prices. But this culture they're totally destroying the whole market. So we have to control this early harvesting, especially in Kinnow Mandarin, if we are going to increase the export, if we're going to get the better quality and better prices from the market. My suggestion is in this matter, PHDAC can introduce some sort of regulation, some sort of uh, controls using their mandate. This is my suggestion that they can control this early harvesting practice because it's a major cause of our problems, early harvesting. A second thing is regarding the standard packaging.
As I shared earlier, last 3-4 years, uh, to to meet the market competition, most of the exporters, mostly they are traders, not good exporters. What they do, they reduce the packing weight so that their price go down and they can sell in the market. Especially in mango season, this practice is very common, and it's also started last couple of years. It's also started in Kinnow as well. If the standard packaging for Kinnow for all grade is 10 kg net, 11 kg gross, and now the practice has started 9 kg net and 10 kg gross, which is absolutely wrong and causing a lot of problems. My opinion is that through these two things we can get solution of our major problems. Another point I would like to share with Mr. Rahil and Mr. Timson that this year before Kinnow season there was strike, at least two weeks strike in Pakistan, and a lot of shipment they were stopped at different roads, plug-in points, seaport, and they were stuck. So my opinion is that these shipments reached when they visited the Indonesia. These shipments reached in their tenure, and might be they observe these shipments because these are ultimately these are with problem because these shipment stuck at road at least 2 weeks. It was thousands of containers which were stuck. So might be they observe more problem than usual. These are my suggestions. Thank you so much. रियाज भाई कब तक पहुंच जाएंगी वो शिपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं जिनकी? I mean, these shipments were stuck in December. You know, December strike, transporter strike in December. These shipment reached in Indonesia, and definitely they have a lot of problem when they reached in Indonesia in and Okay. other. Riaz bhai, what you have mentioned in your first point of your question, that the PHX should do the awareness campaign for early harvest issue to resolve the early harvest issue. Yes, we have well noted your point of view, and will definitely do work on this, and will plan the series of awareness webinars and workshops as we are doing already, especially on the issue of early harvest. How may we control it, and what is the impact of, I should say, bad impact of this early harvest issue, especially in Indonesia market, as well said by our both the experts, Dr. Timson or Dr. Rahil Anwar. And regarding your second point of view, I think this is also more of the understanding issue that we need to our exporters need to have at least this 11 kg gross packaging material rather than to use 10 kg gross just to make the container full with the more number of boxes to have more prices from the market. But this is, I think, resulting in a negative way, that the quality of the fruit resulting in multiple issues as have mentioned by Dr. Rahil sir. If Dr. Rahil and Dr. Timson wants to add something, what Dr. Rayaz Sab has mentioned, you may please. Otherwise, we may go for the next question. Yeah, just one thing is this challenge, because we got 4 or 5 probably exporters to Indonesia early season. Unless they all agree, we work together, not send the sour fruit to Indonesia. Otherwise, not work, because everyone, the market has demand there, and one exporter try to not send the acid fruit, his volume to export will be reduced, his profit will be reduced. Why I should do it? So which means there's clearly something the PhDC to coordinate this how many exporters to Indonesia, and we have to agree. Let someone or from PhD check the containers, the acid level. If before send to the port, if acid level more than this, we sell to domestic. If all the export
to Indonesia agree with this, then it's work. Otherwise, it just educate them. That's this a concept, a knowledge, because they are profit driven, volume driven, not quality driven. Every export I know is a volume. High volume, good profit, make more money. So that issue is really challenging. That's why I think PDC probably is the organization to how to work it out. This. Thank you. जी रही साहब सर. Okay, thank you very much. I highly endorse Dr. Tim. Of course, there need to be develop some regulations or the shipment protocols for consignments like this. But definitely, we need to make a brand and we need to make an identity before Indonesia start giving us good profit. PSDEC and government can definitely play a strong role in that. It's a matter of awareness. Also, it's a matter of protocol and shipment development. Also, it's a matter of shipment quality, inspection of the shipment quality also at origin again, because we are definitely checking many parameters. We should include the sweetness and these parameters also. We can also at the exporter level, we can also map our orchards, that which orchards are producing a good quality fruit, and we can definitely keep those orchard or allocate those orchard only for the shipment to Indonesia. So anyway, these are things. But I just want to add another point to for the PS deck, like what we have done for the Indonesia, and we have identified key preferences for the Indonesia. This needs to be done for many other countries also, because if it depends on the customer who need. If we meet the demand of the customer, he can give us good profit. Rather, it's SDIC or the sweet. So we need to identify the demands of the customer in different other countries also, and we need to meet the demands of those customers as per season, as per market availability. What we have done for Indonesia, the same has to be done for different other export markets also, so that our exporters should already know that the customer in Indonesia need a Kinnow of this kind of the quality, and the customer sitting in UAE or Philippines or somewhere else, even Thailand is a potential market. What kind of customer, what kind of quality is needed by the customer over there, so that he can give us good quality. So shipment protocol and the quality characteristics need to be strictly identified. The trade mission in Indonesia did a nice effort last year, and we had a presentation from them also. So I think we need to join hands to develop these kind of protocols in different other export markets. Thank you. Thank you, Dr. Rahil Saab. I totally agree with your point of view. The market dynamics and the market requirements varies from one to other, as you have mentioned. We need to identify and we need to chalk out all the relevant requirements of the customers and the markets regarding size of the fruit, packaging material, breaks of the fruit, which varies from one market to the other. We need to identify and we need to share these understandings and the standardization with our exporters in loud and clear. Abdur Rahim Khan Sahab, you want to ask something, please? Haji. I have a question for Dr. Rahil Saab. Dr. Rahil, is it possible to change the internal composition of Kinnow by the application of ethylene, especially for acidity percentage? Abdurrahim Saab, I think that's not possible, because Kinnow mandarin is a non-climacteric fruit, and for ethylene, even if we apply ethylene for the lowest level, like 5 ppm, that is used only to degreen the Kinnow, means change of the external color. It's not going to change the internal color. If we want to reduce the acidity, it is just possible by 0.3% of the total acid levels. Right now, we are getting 1.1, 1.2% acid levels, and maybe we can reduce it to 0.9 or 0.85%. But that is only possible through better production practices. Our farmer is not focusing on the better quality production. Like you said, potassium plays a strong role, and especially the potassium has an antagonistic effect with the nitrogen. So if we are going to apply higher dose of nitrogen, it will also deplete the effect of potassium that is already available there. Potassium is important, irrigation is important. uh, Sometime our farmer irrigate the orchards in the late harvest season just to increase the size of the fruit.
Irrigation plays a strong role. So production practices plays a strong role, even including sunlight. But I don't think so. Ethylene is not going to make any effect on that. You're also post-harvest expert. If you want to share anything else, please feel free to share with us. Thank you. And of course, yes, I forgot to mention the maturity level. Yes, maturity also plays a strong role. Yes, over to you, Abdurrahim Saab. Thank you for your reply. Yes, maturity level is essential to maintain the acidity, sugar acid ratio within the fruit. Uh, some people said me that some countries demanding fruit with higher acidity level. Am I correct, Khabar sir? सॉरी सर, दोबारा पूछिएगा, मैंने आपके। कुछ मुल्क डिमांड करते हैं हायर एसिडिटी लेवल को, जी क्या जी, ये एग्जैक्टली। सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। रशियन मार्केट जो जो कि आज हम टैप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट इश्यूज, वो छोटा साइज और तुष फ्रूट पसंद करते हैं। बाकी मार्केट डायनेमिक्स फर्क हैं। कुछ मार्केट्स जो हैं वो मीठा किन्नू पसंद करते हैं, कुछ कम मीठा पसंद करते हैं। तो ये बात रही साहब कि बिल्कुल ठीक है कि वी नीड टू वर्क ऑन मार्केट के हिसाब से। हम लोग स्टैंडर्डाइज करें, मार्केट रिक्वायरमेंट्स को चॉक करें और शेयर करें अपने एक्सपोर्टर्स के साथ कि कैसे वो उस मार्केट की प्रेफरेंस को समझते हुए सामने रखते हुए अपनी प्लानिंग करें। और ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्चर्ड्स परफॉर्मेंस। जो हमारे अच्छे वाइज एक्सपोर्टर्स हैं वो हमेशा ऑर्चर्ड्स की सिलेक्शन जो है वो टाइमली करते हैं, ताकि वो अच्छा फ्रूट और क्वालिटी और जो मार्केट के हिसाब से उस ऑर्चर्ड की प्रेपरेशंस हैं उसको टैप कर सकें। और ये यही एक बेहतर और वाइज सोल्यूशन हो सकता है टू एड्रेस द इश्यूज जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं सर। खबर थोड़ा सा बीच में रहीम साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं, और मेरी थैंकफुल कि राहील ने वेरी अप्रोप्रिएटली आंसर्ड। एक आस्पेक्ट ये है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है रहीम साहब ने। देखें, ये जो इस वक्त जितने भी मुल्कों में हमारा किन्नौ जा रहा है, तो हम अपने जो ट्रेड मिशन हैं उनके जरिए से, बड़ा सिंपल सवाल है, हम चाहेंगे कि हम इन्वॉल्व रहें फ्यूचर में भी टिमसन के साथ भी। और ये जो मेथडोलॉजी उन्होंने डेवलप की है जहाँ से कंज्यूमर रिस्पांस लिया जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है कि अब इसमें तो चूंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ACIR कि दे ऑलवेज रियली सपोर्टेड पाकिस्तान इन ट्रेड एज वेल। Usually in many of the projects, no one care about trade from Pakistan. It's only ACIR. I have seen in several commodities, including you see citrus, even in mango, they really supported Pakistan. Even they supported up to testing this type of carriages. I mean, from Pakistan to different export destinations, exploring new markets as well. I know, fully know. So Australian, we really very thankful to the ACR Australian people. Really, they supported Pakistan. And again, you can see this is the first time I'm hearing in last more than 1 year time in our webinar. And again, really very important information. The crux is the consumer of your importing country. That matters. Whatever we have discussed. आज हमने जितनी बातें भी की हैं ये शो करती हैं कि भाई हमें कंज्यूमर को देखना है। और आपने सही जवाब दिया है कि रशियन मार्केट जो है लिटिल सॉवर जो है ना वो पसंद करती है। तो ये जो एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए किस फॉर्म में, इवन मैंगो में भी और मेनी अदर कमोडिटी। आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है आज जो हमारा वेबिनार है कि हमने जो है कल जो हमारा जो हमारी डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की, ये जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वहाँ की पर्स हमने ली है। ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल 1 साल में हुआ है। हमें मेरा ख्याल फ्रीक्वेंटली हम अपने एक्सपोर्टर को एजुकेट करें, और उसमें जो भी इस वक्त डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर हैं और ट्रेडर्स हैं, फिर पंजाब डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी TDAP है। मेरा ख्याल है हमें इन इश्यूज के ऊपर बड़ा सीरियसली जो ये फीडबैक आ रहा है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अपनी एडजस्टमेंट करनी है, हम कंज्यूमर को नहीं बदल सकते। कंज्यूमर जी का जो टेस्ट है उसकी प्रेफरेंसेस वही रहेंगी। अगर हमने एडजस्टमेंट करनी है तो हमने करनी है, वो प्रोडक्शन लेवल की हो या मतलब है कि जी उसमें और मीडियम टर्म की इंटरवेंशन हो, हम नहीं करनी।
तो मैं रियली सॉरी, मैं मेरा ख्याल है ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे गया तो आई मीन कि ये, हाँ, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और ये आई ओपनर है जो आज का सेमिनार है, और एक ट्रेंड सेटिंग है। मैं एक्नॉलेज करूंगा फुली टिम सन को भी और राहिल को भी, दे रियली एजुकेटेड अस comprehensively, not me, our exporter, क्योंकि हम यही वजह है कि डिक्लाइन है सेक्टर्स में, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रही डिक्लाइन क्यों है। रियली मैं फर्स्ट टाइम समझा हूँ कि यार डिक्लाइन क्यों है, मार्केट आपके हाथ से निकलती जा रही है, तो अब कब तक इंतजार करेंगे। ये तो एक आज के वी आर थैंकफुल टू एसीआर को उन्होंने सपोर्ट किया। राहील भी गया, राहील ने खुद भी जाके वहां डेटा लिया, टिमसन ने लिया, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अगर हम एक और बात, अगर हम सपोर्ट ना हो किसी प्रोजेक्ट की, जैसे ए से यार की या यूएस ट्रेड की, तो क्या हम ये काम नहीं करेंगे। ये हमारे लेवल ना बढ़ती, ये एक आई ओपनर है जो आगे का सेमिनार है, और ये ट्रेंड सेटर है। और हमें इतनी जो भी चीजें इस वक्त एक्सप्लोर हुई हैं, वी हाईली रिकॉग्नाइज, वी हाईली अप्रिशिएट, एंड वी मस्ट टेक अप दीज इश्यूज फॉर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर ऑल मार्केट। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं अर्ली बोल गया, मे भी कुछ और लोगों ने सवाल सवाल करने थे। एनीवे, आई अप्रिशिएट। थैंक यू सर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम कंक्लूड करें आज की सर मेरी सेशन। सजेशन है जी एक, जी प्लीज सर। पीएच डेक डॉक्टर रहील के लेबोरेटरी के साथ या डिपार्टमेंट के साथ इन्हें एक 20 फीट कंटेनर ला कर दे, जिसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह सारा कुछ हो। तो डॉक्टर रहील के पास मैन पावर जो है, वो इस चीज को प्रोटोकॉल डेवलप कर कर दे सके कि हमारा वेंटिलेशन परसेंटेज क्या होनी चाहिए, हमारी जो प्रोड्यूस का पल्प पर टेम्परेचर क्या होगा, तो अंदर फिर हमारी ह्यूमिडिटी किस तरह मेंटेन रहेगी। तो ये सजेशन है, इफ यू कैन डू तो ठीक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे एक और प्रोटोकॉल डेवलप करने में। थैंक यू जी। Khan Sahab, thank you very much. Dr. Azim would definitely like to comment on what you have requested for, suggested for post harvest lab, और रहील साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा पॉजिटिवली उसमें ऐड कर रहे हैं चीज़ों को। रहील साहब से भी मैं सुनना चाहूँगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या इस बारे में कमेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी खबर साहब, मेरा इंटरनेट का इशू था, सर, आप जरा दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन प्लीज। खान साहब ने सजेशन दी है कि आपके लिए पीएच टेक। जी खान साहब, अगर आप ही कर दें इसको ऐड। राहिल साहब, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है विद इन द कंटेनर, ये बहुत ही अहम होता है फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस। हमारे कंटेनर के अंदर एक टेम्परेचर होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं, एक पल्प का टेम्परेचर होता है, एक हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम होता है। जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है वो 20, 25, 30, 100% पर चलता है। हमें एक को रिलेशन चाहिए इन तीन चीजों के अंदर कि मेरा टेम्परेचर क्या हो पल्प का, तो मेरा बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कंटेनर का क्या रहेगा, और मेरी एयर वेंटिलेशन कैसी रहेगी। ये उन फ्रूट्स के लिए भी बहुत अहम होगा जो कि इथिलीन एमिस्टेड फ्रूट्स हैं। तो हमें ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा प्रोटोकॉल देगा। इस वक्त तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमें मालूम ही नहीं है कि वेंटिलेशन सिस्टम को किस तरह एडजस्ट करना है। हमें जो उसका जो कंपनी वाले सेट कर देते हैं जी, 10 पर कर देना, 20 पर कर देना जी, हम कर कर दे देते हैं। हालांकि जब आप लोडिंग करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम की परसेंटेज कुछ और होती है। और यह मेरा एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपोर्ट किया था किसी पार्टी ने गार्लिक, तो उनके साथ कि जब वेंटिलेशन सिस्टम को हम मैनेज करते हैं, टेम्परेचर साथ को रिलेट करते हैं, तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। ये हमारे पास लैक करता है इस चीज का, इसकी एक्सपर्टीज का। अगर हम वो डेवलप पॉजिटिवली कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो डेमरेजेस होते हैं और हमारे फ्रूट की क्वालिटी होती है, वो काफी तक हम उसको मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू जी। और इसके लिए जी आपके बहुत पास 20 फुट का कंटेनर दे दें आपको लेकर, पीएच डेक वाले, तो आप उस पर अपनी स्टडी करें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। बिल्कुल योर क्वेश्चन इज वेल टेकन एंड योर पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड। चूंकि आप भी रफीक के साथ कनेक्टेड हैं एंड विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट, आपकी जो कंसाइनमेंट्स यहाँ से जाती हैं हम उसको थोड़ा सा आपकी मदद के साथ मॉनिटर भी कर सकते हैं, और फॉर द अपकमिंग सीजन वी कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर
हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर पता है कि 15 से 20 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से वेंटिलेशन होना चाहिए, और इस तरह से 15 से 20% उसकी ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल एक मॉडल डेवलप करना कि हमारा किन्नू एंड मार्केट तक सही पहुंच सके, उसके लिए मुझे बिल्कुल आपके साथ काम करने की जरूरत है, और हम कुछ कंसाइनमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीजन के लिए हम इस तरह से इकट्ठे मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। Thank you very much for the suggestion, and I'll happy to collaborate with you. थैंक यू वेरी मच सर। मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी हो गया। मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर अजीम साहब टू टेक्निकली कंक्लूड briefly, or what are the our takeaways from today's suggestions and the informative and the valuable material shared by our both the experts, Dr. Rahil and Dr. Timson, and what may we do in our coming days. I would request Dr. Azim to please add on this or comment on this. थैंक यू। मेरे ख्याल मैंने कंक्लूड कर दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है, टेक होम मैसेजेस हैं जो पीएचडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमें ये प्रॉपरली इसको कम्युनिकेट करना है जहाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो जो पॉलिसी साइड है वो पॉलिसी साइड ही करेगी। आई मीन के जी जो सीजनैलिटी है, अर्ली सीजन जो इस वक्त हर एक्सपोर्टर जो है, हम याद है हम नवंबर में वहाँ थे कराची में एक्सपो में, और अपनी एक्सपो में, और वहाँ जो इतना प्रेशर था, हमारे साथ ही टीपीपी के लोग भी थे, आई मीन के डीजीज भी, और डीजीज से हर कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था कि 25 बस आज ही हमारी कंसाइनमेंट जानी चाहिए। हालांकि वो टाइम नहीं था और हम सब लोग उसमें शामिल हैं। तो आई मीन कि जब हम सब लोग कोई किसी प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करेंगे, और उसके बाद बाकी चीजें इतनी ऑब्वियस हैं जो राहील ने और इंसान ने की हैं कि वहाँ हमारी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी उसकी प्राइस ही कोई नहीं। $1.8 इज नथिंग, 1.2 to $1.8 एज कम्पेयर टू के वो वहाँ जो किलो बिक रहा है उसका तो कोई कंपेरिजन नहीं परसेंट किलो से। बात ये है कि जो चीजें जो इस वक्त फीडबैक है ना, मेरा ख्याल है आजकल से जो वेबिनार है, हम मुसलसल हर मतलब मेरा ख्याल है हमने इस साल में 5 या 6 इवेंट किए हैं सेक्टर पे, शायद ज्यादा किए हैं। अगर हम B2B करें तो मेरा ख्याल है 15-16 बन जाते हैं। तो उन तमाम एक्टिविटीज का करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम जो हमारी डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की उसकी उसका जो फीडबैक है, ये तो एक फीडबैक ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास आ गए, सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी, और यही कुछ हो रहा है बाकी फ्रूट से। और किन्नों के साथ तो यही हुआ है। तो अब नई मंडियां ढूंढनी है तो वहाँ के जो हमारे मैं फिर कहूंगा, मेरा ऑलरेडी क्रिटिसिज्म होता है ट्रेड मिशन के ऊपर, सॉरी, कि हमारे ट्रेड मिशन जो है ना उनसे काम नहीं लिया जा रहा, या वो अपना एक रूटीन का काम कर रहे हैं। हमें उन्होंने ये फीडबैक देने, ये कितने मुश्किल सवाल है जो राही ने पूछे हैं वहां जाके, या टिमसन ने पूछे हैं वहाँ इंडोनेशियन मार्केट से, जकार्ता से, वो आसान से सवाल है। तो क्या हमारा मतलब है कि मिशन जो है ट्रेड मिशन है, क्या वो ये सवाल नहीं पूछ सकता, फीडबैक नहीं दे सकता कि हमारी चीजें क्यों ऊपर नहीं जा रही, क्यों हम स्टैग्नेंट हैं। और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, प्रोड्यूसर के लिए भी। अगर आप एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एक एक्सपोर्टर जो है वो जल्दी में या प्रॉफिट, यही टिम साहब ने कहा कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कि हमें कुछ बस मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी। हमें कंज्यूमर को खुश करना है, हमें कंज्यूमर को जो है वो उसके टेस्ट को देखना है, उसकी सेटिस्फेक्शन जो है ना वही हमारे एक्सपोर्ट को जो है वो सस्टेन भी करेगी, हम आगे भी बढ़ेंगे। वी आर रियली, आई एम वेरी पर्सनली वेरी थैंकफुल टू बोथ स्पीकर। इन्होंने हमें एक नई राह दिखाई है। मेरा ख्याल है हमें अपनी सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप से हट के अब हमें जो कंज्यूमर को है जो है वो देखना चाहिए, और वो देर और उनकी प्रेफरेंसेस, टेस्ट को भी। वेरी थैंकफुल टू AC. I was focal person for many projects when I was chairman PRC, even DG NARC of the ACA project. I know they really work, will support us very effectively in their projects. और वो मैंने पहले भी बात कर दी, ट्रेड के हवाले से भी हम हेल्प करते हैं, जो कि किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होता। लोग कहते हैं कि ठीक है जी हम यहाँ लोकल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के लिए या सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, ट्रेड के हवाले से बहुत कम आते हैं, फॉरेन फंडिंग आती है। तो हम रियली थैंकफुल, और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी कि उन्होंने बड़ी पेशेंस से, काफ़ी लंबा सेमिनार हो गया, इंटरेस्टिंग था ऑफकोर्स, और बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और एक आई ओपनर भी है। तो फ्रॉम माई साइड खावर, थैंक यू। आप अपने खत्म कलमात कहें और हम रुखसत लें। ठीक, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Azim Saab, for your valuable comments and concluding remarks.
I would like to thank Dr. Timson for sparing his precious time for today's webinar. And yes, Dr. Raheel Anwar, he is my teacher and mentor as well. And I learned a lot from him. I would like to extend our full support from my organization to both of the experts, बल्कि ज़्यादा expert यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सर, खान साहब भी हैं, अजीम नकवी साहब भी हैं, तो सबके लिए PH Tech's platform is available for any kind of research, for any kind of work you want to do, just to improve the value chain, supply chain, and the market issues you already have shared with us regarding Indonesian markets. We need to standardize, we need to chalk out the market requirements separately, market preferences separately, and we need to share all those market requirements, both customer requirement and regulatory requirement as well. We need to share all the requirements with our exporters, coupled with the awareness sessions, webinars, workshops. PHX platform is available for such kind of supportive activities. And I think that's it from my side. And for our participants, the recording of today's webinar would be available soon on our YouTube channel. ये हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज के ऊपर भी हमारी अपकमिंग एक्टिविटीज़ और जो एक्टिविटीज़ हम कर चुके होते हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल होती है। एंड द सेम हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमारी सारी अपकमिंग एक्टिविटीज़ की डिटेल्स आ रही होती है। तो आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने पेशेंटली आज के सेशन को सुना, और यकीनन बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थी हमारे सबके लिए। इंडोनेशिया मार्केट के ऊपर दोनों कंपोनेंट के ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स ने डिटेल में बात की। क्वालिटी कंसर्न्स के ऊपर जो इन्होंने रियल टाइम क्वालिटी इश्यूज को ऑब्जर्व किया, और दूसरा मार्केट प्रेफरेंसेस और मार्केट कैसे वर्क करती है, मार्केट डायनेमिक्स क्या है, और हमारे एक्टर्स को कैसे उन चीजों को वी ऑल नीड टू ज्वाइन, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्च का काम नहीं है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये तो हमारे रोल है। तो एकेडमिया के साथ, ताकि हम लोग अपनी जो सप्लाई चेन और वैल्यू चेन के इश्यूज हैं उसको इम्प्रूव कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे, वैल्यू चेन्स के ऊपर आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज जी। Okay, bye Tim, thank you very much. Bye. थैंक यू टीम, थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much.